S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. So, हर एक घर का एक बजट होता है. We as consumers need to reach to that budget and reach to that equilibrium point जहाँ जो बजट है वो बिल्कुल सेटल्ड हो और उस बजट में आई एम सेटिस्फाइड एज अ कंज्यूमर. Hello everyone, welcome to S. Chan Academy. If you want to study the topics in detail, please refer to the book by S. Chan Publishing. The details of the e-book are there in the description box. Here we are now going to learn that how this, as a consumer or as a producer, we are going to have a particular economic region जिसमें मुझे भी फायदा हो, मेरा बजट भी रहे, and I reach to the consumer equilibrium point. As a consumer, I reach to the consumer equilibrium, while on the other hand, if the producer is there, producer reaches the producer equilibrium. Both the concepts work simultaneously. Let us understand this, but again, let's do not forget that this thing is also dependent on law of variable proportion for the producer and law of diminishing marginal utility for the consumer. पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किन assumptions पे बेस्ड है, क्या causes है जिसकी वजह से we get the law of variable proportion. Then let us try to understand what exactly is budget line and consumer equilibrium so that we can relate it to the producer's equilibrium at the same point of time. So in the last section, we have talked about law of variable proportion. Let us now understand few properties of law of variable proportion, which is very important because we know ki how the law is working, but what exactly are the features? How it is going to work in the future if there is law of variable proportion constantly applied. So in the short term, we cannot vary all factors of production, as I told you. सारे factors vary नहीं कर सकते हमेशा, और long run में भी all the factors are constant, ये भी नहीं हो सकता. All the factors combine optimally to produce maximum output. So law of variable proportion says that there is optimum output only when you combine all the factors. Then before the point of optimum combination, जो हमारे units होते हैं variable factors, अगर वो increase करते हैं या decrease करते हैं, then there are changes. So you will reach the optimum level due to this law after a certain point of time. और initial stage में the total product rises, then it becomes constant and then it starts falling. Other than this, we can also say that beyond a maximum optimum combination level, as a producer, the producer needs to work on various other combinations जहाँ पे वो decide कर सके कि किस तरीके से marginal product को हमें negative में नहीं जाने देना. That is one of the very important part which needs to be worked in the law of variable proportion. But these are certain properties. Definitely they are working towards the improvement of this. Certain things are common or fixed for this law and these are those things जो कि fixed है. इनको आप easily change नहीं कर सकते हो. But what happens is that when you are working, there are certain assumptions. Assumptions are what? जिसके basis पे आपने ये law establish किया है. वो assumptions क्या है? That producer is always rational. A producer will always think that how to maximize the profit. And beyond that, when it operates in the short run, because of certain factors or something, they need to categorize them in a particular way, either fixed or variable. जो law of variable proportion है वो allow करता है एक combination of several factors which might lead to earn the maximum profit. So this needs to be taken care of कि किस तरीके से आप अपना profit जो है वो maximize कर रहे हैं. But at the same time, the cost reduction is important. That becomes very important in the long run. And it is considered that after a certain point, factors of production become imperfect substitutes. So we know that there are factors which are working simultaneously, but
after a certain point of time, the factors will definitely, either become the substitutes or complement each other. So that will happen. As a producer, you need to take care of all those things, and you need to make sure that these things are not impacting your business. Most important of all these is what causes the law of variable proportion to work. क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्क कर रहा है? कांस्टेंट टेक्नोलॉजी. वी नो दैट टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इज वर्किंग. So when there is this law of variable proportion working constantly, you need to think that technology कितना active है. It is assumed that the state of technology is constant. हम ज़्यादा इसको वेरी नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि इसके वेरिएशन से हमारा आउटपुट लेवल बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है. Then the variable factors. What is variable factor? Variable factors are basically the factors which are variating constantly. So we need to keep this thing in mind that when production factors are there, they are variating also. And these variable factors are very much important to take care of so as to make the law of variable proportion successful. Because once this is successful, you can easily move on to your production. You can easily apply this to your cost. Homogeneous units, homogeneity of the production. आप एक चीज अनियन प्रोड्यूस कर रहे हो, एक टमेटो कर रहे हो, एक कोई फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप तीनों पे सेम रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो. What you need to understand that the fruits are a different category, different vegetables are of different categories, spices are of different category. So homogeneity of units are very much important in order to apply this. Why? Because unless and until you have homogeneity and heterogeneity exists, आप हर एक पे same law apply नहीं कर सकते. And the most important part, this one particular factor is not only feasible for long term in the long run, but short run में इसका utilization बहुत ज़्यादा है. So this is how the law of variable proportion works. Now, I will let you know that how this is actually correlating with law of diminishing marginal utility. And as a consumer, I'll make you understand that what exactly is budget line. Then we can move on to the Iso-cost line, Iso-quant, and the ridge line at the same time. Let's just understand what exactly is budget line. See, when I'm talking about law of variable proportion, law of variable proportion works as it is like law of diminishing marginal utility, which has been already explained in the previous sections. Law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि आपकी utility of the consumption, whatever you are consuming, वो धीरे धीरे reduce होता है. Similar way, law of variable proportion में whatever units you are applying, they will have to reach a maximum utility level and then they will start reducing with their own capabilities. Now what happens, see, when I have, as a consumer, what I have is a constant budget line. Budget line is always downward sloping. At the same time, it touches the y-axis and x-axis. What is this? This can be my budget or the price or the cost, whatever you are applying, and this is the unit. ठीक है? अब होता क्या है इसमें? Budget line keeps on increasing. This is one line. This is one line. These are two, maybe B1, B2 and B3. ये तीन बजट लाइन है. अब इन बजट लाइन पे क्या होता है? यू कैन मेक योर एक्सपेंडिचर बिलो दिस रीजन. आप इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका बजट इंक्रीज कर रहा है. बजट क्यों इंक्रीज कर रहा है? योर इनकम इज राइजिंग, मे बी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है. देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स. वन कॉमन फैक्टर इज कि आपकी इनकम जो है वो राइज हो रही है. अब ड्यू टू राइज इन इनकम व्हाट इज हैपनिंग कि आपका ये जो बजट लाइन है ये कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, बट इसके बियॉन्ड यू कैन नॉट गो. दिस इज वन कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक यू कैन से इन द इकोनॉमी
you can produce using this particular budget line. We are talking about a two product economy here. तो यहाँ क्या हो रहा है, I can have either good X और good Y. तो अब मेरे पास क्या है, 3-4 कॉम्बिनेशन है. ये कॉम्बिनेशन किसके हैं, विथ द बजट लाइन. जितना मेरा बजट है, आई एम कंज्यूमिंग टू प्रोडक्ट्स X एंड Y. अगर मैंने Y को ज़्यादा किया तो मुझे X कम करना पड़ेगा. अगर मैंने सेम वे X को ज़्यादा किया तो मुझे Y को कम करना पड़ेगा. वाइस वर्सा, सिंपल. अगर आपके पास एक बजट है, लेट्स से 100 रुपीज़, एंड यू कैन परचेज वेफर्स एंड आइसक्रीम, लेकिन आपको खरीदना 100 के अंदर ही है. आप आइसक्रीम ज़्यादा खरीदोगे तो आपको वेफर्स कम खरीदना पड़ेगा, वेफर ज़्यादा खरीदोगे तो आइसक्रीम कम खरीदना पड़ेगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है यही इन द पर्टिकुलर कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर. नाउ द पॉइंट इज व्हाट हैपन्स, अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, वेयर विल बी आई एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. आई विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मेरा बजट लाइन भी क्रॉस ना हो और मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी सेम हो. दैट मीन्स व्हाट, मैं X और Y, दैट इज आइसक्रीम और वेफर, उतना कंज्यूम कर रही हूँ जिससे मुझे 100% सेटिस्फैक्शन है. बट उसका मतलब ये नहीं कि मुझे 100 रुपीज़ से क्रॉस करना है, मुझे 100 रुपीज़ के अंदर ही रहना है. दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरा बजट लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है. बजट लाइन 2 पे मैं इस पे इक्विलिब्रियम पे हूँ, दैट मीन्स इतना X और इतना Y. इस पॉइंट पे इतना X और इतना Y. मेरा बजट इंक्रीज हुआ तो दोनों कंजम्पशन भी बढ़ गई X और Y की. व्हाट हैपन्स, द पॉइंट एट विच budget line and consumption of two goods are collaborating with each other or intersecting with each other, at that point I will be at equilibrium. As simple as that. तो अगर हम इसको यूज करते हैं इस तरीके से, फाइनल अगर मैं यूज करूँ इसको, what will be the answer? The answer would be, मेरा फाइनल बजट लाइन ये है, इसके अंदर आई कैन कंज्यूम एंड दिस मच ऑफ X, दिस मच ऑफ Y. I will be using or purchasing to get the equilibrium level. You should not cross your budget line, that means the 100 rupees, and at the same time you should stick to your consumption of X and Y, that is ice cream and wafers, to the level which is giving you the maximum satisfaction. अब वो आपको डिसाइड करना है किस पे आपको कितना खर्चा करना है. सेम वे द प्रोड्यूसर डिसाइड्स कौन से फैक्टर पे उसको कितना इन्वेस्ट करना है, सो एज टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, एंड ही शुड नॉट क्रॉस दिस बजट लाइन. एज अ कंज्यूमर आई एम नॉट क्रॉसिंग इट, सो एज अ प्रोड्यूसर वो कहाँ से खर्चा ज़्यादा करेगा, उसके पास तो इतना ही पैसा है. ठीक है, so let's just move on. By now you know that as a consumer how much you are investing, which should not cross your budget line, but you are consuming those products which are giving you maximum satisfaction. In the similar manner, we will be learning that how the producer is making his expenditures and how he is creating an economic region between the ridge lines using Iso-quant and Iso-cost curve so that they should not cross that particular limit. So let's take a short break and resume after this to understand further that what exactly is the ridge line and what is the economic region. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy. Let's now understand what is ridge line.
Before going to the break, we have understood that how the consumer is reaching the equilibrium level. Now it's time to understand how the producer is reaching the equilibrium level. Because unless and until these two people are at equilibrium, the economy is not going to sustain. There will be always a kind of, up and down in the economy, which might impact the market as well. So there are certain regions within the ridge lines using certain concepts like Iso-quant and Iso-cost curve, which are going to make you understand that where the producer is actually manufacturing. बहुत ईजी होता है, हमारे पास सामान मार्केट में आ जाता है, ठीक है, हमने ले लिया, हम घर पे ले गए, हमारे घर का बजट था, हमने इतना कंज्यूम किया. कोई एक पार्टी हुई रैंडमली, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर ज़्यादा कम हुआ. प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर को भी तो मार्केट में डिमांड देखना है, प्रोड्यूसर को भी पीछे से रॉ मटेरियल देखना है, प्रोड्यूसर को भी सप्लाई देखना है. कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, he will be deciding that yes, this is the economic region beyond which I will not move. So let us understand this with the concept of ridge line. So ridge line, the marginal product of a particular factor may be negative if the quantity used is too large. This is what we learned in the case of marginal physical product in the law of variable proportion. एक रैशनल प्रोड्यूसर की हम अगर बात करें तो वो क्या करेगा? उस मार्जिनल प्रोडक्ट से बियॉन्ड नहीं जाएगा जब वो नेगेटिव जा रहा है. हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिज लाइन, कि क्या वो उस पर्टिकुलर ग्राफ से बाहर जा रहा है, क्या वो मार्जिनल प्रोडक्ट को नेगेटिव होने दे रहा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली. सी, द टोटल the law of variable proportion works in 3 stages: stage 1, stage 2, stage 3. अगर हम इन तीनों स्टेजेस को कंबाइन करते हैं, we get these are what? Iso-quant curves. Iso-quant means equal quantity. Iso-quant is same as the level of satisfaction where the consumer is there. कंज्यूमर के केस में हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, एंड इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर वी कॉल इट एज द आइसो-क्वांट कर्व. आइसो-क्वांट कर्व में वॉट एवर इनपुट्स द प्रोड्यूसर इज यूजिंग, ही विल बी सेटिस्फाइड एट ऑल द लेवल. अगर मैंने ये पॉइंट लिया, इस पे भी सेटिस्फाइड है, इस पे भी सेटिस्फाइड है, इस पे भी सेटिस्फाइड है. दीज आर डिफरेंट आइसो-क्वांट कर्व्स. इसमें कैपिटल के साथ लेबर, लैंड, वॉट एवर यू आर यूजिंग, उसका रेशो हर पॉइंट पे है. कर्व इज वॉट? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स. सो इन दिस इफ आई से कि ये अगर पॉइंट्स मैंने कंबाइन किया इन तीनों को या इन चारों को, आई विल गेट वन रिज लाइन. सो यू आर गेटिंग हियर टू रिज लाइन्स बाय कंबाइनिंग 2 पॉइंट्स. अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आपका रिज लाइन अगेन इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग लेवल. अगर ये कांस्टेंट हो जाता है आइसो-क्वांट कर्व, तो आपका रिज लाइन इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग लेवल. सो यू नीड टू मेक दिस थिंग क्लियर कि रिज लाइन कौन से स्टेज पे आपको इकोनॉमिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन देगा. दैट इज स्टेज 2. व्हाट इज रिज लाइन? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द आइसो-क्वांट कर्व्स which are giving equal satisfaction to the producer. Now, what is happening with the iso-quant line? See, iso-quant curve, iso-quant line, these are interrelated. हमारे पास एक simple cost है. Cost is as a producer, the budget line. Budget line for the consumer, and for the producer, it is the iso-quant line. Cost is giving you the budget. So here it is the budget. तो आपको budget क्यों चाहिए? Why you require the budget? You require the budget because beyond that budget you cannot cross. ये चीज़ आपको as a consumer भी ध्यान रखना है, as a producer भी ध्यान रखना है. So since you cannot cross beyond this, you need to understand कि इस particular iso-quant पे जहाँ वो हर level पे satisfied है, बट उसका बजट क्या है? बजट है आइसो-क्वांट लाइन. दिस पर्टिकुलर लाइन आइसो-क्वांट लाइन जो आपको इससे बियॉन्ड नहीं जाने देगा. मैं तो सेटिस्फाइड इस पे भी हूँ, बट मेरा बजट यहीं तक है.
So what is happening next? Ridge line, the stage 1, stage 2 and stage 3, but ridge lines are specifying the stage 2 level. Ridge line I have already shown you diagrammatically. Let's just understand it in a more clear way. Let's see this. देखो, आपके पास different iso-cost lines है, different lines पे आप work कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास quantities है अलग अलग, कैपिटल की कितनी क्वांटिटी है, लेबर की कितनी क्वांटिटी है. व्हेन यू कंबाइन दीज पॉइंट्स यू गेट द रिज लाइंस. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, रिज लाइंस आर द लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन द आइसोक्वांट लाइंस और द आइसोक्वांट कर्व्स, जो आपको क्या बता रहा है दैट देयर आर टू डिफरेंट combinations which you can make in order to get the optimum output. So in between this level is the economic region. आप यहीं तक कर सकते हो प्रोडक्शन, इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि आपका जो बजट लाइन है वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है. ये पॉइंट्स एक्चुअली आपके सेटिस्फैक्शन लेवल के हैं, बट since you are a producer, you require a larger area जहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन कर सको. Therefore, you require the ridge lines which will let you be in the region जहाँ पे आपको maximum, you can say you can get the maximum output out of here. So what is factor? Optimum factor combination. The term itself is, self-explanatory. Optimum is एक particular level जो कि optimized है, जो आपको हर तरीके से एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहा है. What exactly is happening? An iso-quant or iso-product map represents various technical possibilities of producing different levels of output. This is what? This is iso-product map. जब हम बहुत सारे कर्व्स एक साथ लेते हैं हम उसको बोलते हैं मैप, नॉट ग्राफ्स बट मैप. तो इसके अंदर जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा यूजिंग कैपिटल एंड लेबर, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? दैट विल बी टर्म्ड एज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन. क्योंकि दो फैक्टर्स हैं जिनको हम कंबाइन करके कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहे हैं, और वो क्या है? वो है ऑप्टिमम लेवल. सो दैट इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर. नाउ ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन में हम आइसो-कॉस्ट लाइन की बात करते हैं. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डिटरमाइनिंग व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स द फर्म विल चूज फॉर प्रोडक्शन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज व्हाट? दिस इज द आइसो-कॉस्ट लाइन. आइसो-कॉस्ट लाइन आपको क्या बता रहा है? फैक्टर्स जो कि ऑप्टिमम है, किसके लिए? प्रोडक्शन यूनिट के लिए, जो आपको एक प्रॉपर लेवल दे रहा है कि हाँ इतना ही मुझे प्रोड्यूस करना है, एंड द बजट शुड बी दिस ओनली. ठीक है, बजट क्या है? दैट इज द आइसो-कॉस्ट कर्व. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट लाइन, also known as the budget constraint, it exhibits all the combination that the consumer can have, but at the same time the budget line also exists for the producer in the form of the iso-cost curve. तो कॉस्ट आपको क्या दे रहा है? एक बजट दे रहा है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, आपको कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है जिससे कि आपके पास एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट रहे. सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग लेट्स से सैंडल्स and at the same time some kind of floaters or maybe shoes, तो आपको अपने ऑप्टिमम लेवल पे रह के ऑप्टिमम कैपिटल और लेबर को यूटिलाइज करके हाउ मच शूज यू आर प्रोड्यूसिंग, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फ्लोटर्स यू आर प्रोड्यूसिंग, so as to maintain the profit level. Profit maximum, cost minimum, resources constraint, but at the same time the cost of the production remains there. सो आपको ये देखना है कि प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम करना है, तो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप कौन सी चीज़ यूटिलाइज कर रहे हैं. सो यू कैन सिंपली से इफ एज अ कंज्यूमर आई हैव अ बजट ऑफ 100 रुपीज़, दैट 100 रुपीज़ विल लेट मी परचेज टू थिंग्स, आइसक्रीम एंड चिप्स और वेफर्स. तो उनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, एक को बढ़ाना है एक को कम करना है.
Similarly, as a producer, if I'm having a budget of 1 lakh, मुझे floaters भी produce करने हैं, shoes भी करना है, and simultaneously some other range, तो मुझे ये देखना होगा through what particular combination, how many numbers of each will give me maximum output and maximum profit with minimum cost. So by now, we are able to understand that what all combinations are going to give you a particular output. That means even if the cost is there, which is dependent on an L-shaped curve or an U-shaped curve traditionally, the production at the end is dependent on multiple other factors, including the law variable proportion and how many factors of input are involved in it. So, as a rational producer, we should always figure out that what is the economic level of production, which will be done using the Iso-cost curve, Iso-quant segments, Iso-quant map, and the ridge line. In the long run, not only the factors will vary, but also the short run things will apply. So overall, we have been able to learn that how the rational producer behaves and how the consumer as a rational human being will behave having a particular budget. If you want to study the topics in detail, please refer to the book by S. Chand Publishing. The details of the ebook are there in the description box. If you found the video interesting, please like, share and subscribe. And please don't forget to press the bell icon for future notifications. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.